Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadanara Yashodanandana Brajadanarandana Jamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Radha Madhava Kunda Bihari Radha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Premanande. Jai Mishapad Paramahamsa Pri Vrajagachajastu Terasatya Sri Simad His Divine Grace Srila Bhai Saranaravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Haridas Thakur Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Dani Thai Gold Premanande. All glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurandiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Syam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Ditam Dvam Sajivam Advaitam Savadutam Paritana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakanditam Syam Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tribhyasya Kripa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the Supreme Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Sri Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naistike. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Ramasamhitam Uttama-shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreta Lokasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyai Namaha. Om Kibacharam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Maham Bande Sri Gurum Dinataram Yat Kripa Maham Bande Sri Gurum Dinataram. Hare Krishna. Welcome to our Srimad Bhagavatam class, reading second chapter of the first canto, entitled Divinity and Divine Service. And yesterday the purport was long, so we are continuing the same verse. And that was verse 28 and 29. Very important verse. Veda Vasudeva Paraveda Vasudeva Parakriya Vasudeva Param Jnanam Vasudeva Param Tapaha Vasudeva Paro Dharmo Vasudeva Paragatihi. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing a sacrifice is to please Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. Him. He is the supreme goal of life. Here. If such force Vasudeva by good association with saintly persons. Captivated again by material wealth and honor. लेकिन देखा जाता है कि जो राजा लोग होते हैं वो उनको ऐसी अच्छी सुविधाएं मिलती है लेकिन फिर भी वो भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाते हैं. But their unfortunate position is that they tend to forget. ब्राह्मण के परिवार में या अमीर के परिवार में कोई जन्म है तो कोई पुण्य जो करके आया है. लेकिन दुख की बात ये है कि वो दुनिया के आडंबरों में आकर्षित हो जाते हैं. And thus they practically forget the aim of life. This is also so for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing. By such
culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, and non-violent. By culture of knowledge, one becomes prideless. जब हम ज्ञान के संस्कृति का अभ्युदय होगा बढ़ेगा तो उससे आदमी अहंकार रहित होगा Yeah. Non-violent, और वो नॉन वायलेंट मतलब वो आक्रोश रहित रहेगा forbearing, और वो forbearing, सहनशील होगा simple, सरल होगा devoted to the great spiritual master, गुरु के प्रति डिवोटेड शरणागत होगा and self to old age and disease. सबसे आसक्ति काट के पी सके And all culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of Godhead, Vasudeva. जो हम ज्ञान का सांस्कृतिक अभ्युदय करेंगे उसका आखिरी चीज है भगवान परम भगवान के भक्ति के सेवा में Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. इसलिए ज्ञान के अलग अलग भागों के सांस्कृतिक अभ्युदय की पराकाष्ठा भगवान की भक्ति तक पहुंचना है Culture of knowledge leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. और ज्ञान का सांस्कृतिक अभ्युदय जो है वो भगवान के Knowledge. In बहुत so सारे many, लोग ज्ञान को बढ़ा रहे हैं there are so many colleges and so कॉलेज many है स्कूल है universities, यूनिवर्सिटी है so many big libraries बड़े बड़े लाइब्रेरी है full of books. किताब छपे हैं But unfortunately, most of that so-called cultivation of knowledge does not bring one to Vasudeva. लेकिन वो सब पढ़ के कोई वासुदेव तक नहीं पहुंचे So that is why Prabhupada one time was nicely explaining, quoting his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर को याद करते हुए कह रहे थे That if all the books in all the libraries around the world were to somehow burn by accident, and only Bhagavad Gita was left, there would be no loss. अगर दुनिया के सारे किताबें जल जाए लाइब्रेरियों से और केवल एक किताब गीता बच जाए दुनिया में कोई इतनी शक्तिशाली ग्रंथ है Doesn't mean we will now start burning books. It is burn everything. It is burn everything. It is burn everything. क्या सब जला देना चाहिए महाराज जी बोलेंगे They will burn by themselves. वो लोग अपने से आप जला लेंगे Then he continued to explain that if all the books in the world and all the libraries were to burn, including the Bhagavad Gita, गीता के साथ because Bhagavad Gita is within Bhagavatam. गीता जो है भागवतम के अंदर निहित है Then he made a third statement, तीसरा चीज बोला that if all the books in the world and all the libraries were to burn, including Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, अगर गीता और भागवत दोनों भी जल गए सबके साथ and Chaitanya Charitamrita would be left, चरित्र चरित्र में तो गया है there would be no loss. तो कोई दुनिया में लॉस Yeah, because within the Chaitanya Charitamrita, all of the most important instructions of both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. गीता और भागवत के सारे महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई Actually, a few hundred years ago, there were only books that were connected with divine subject matters. 200 साल पहले केवल वही पुस्तकें लिखी जाती थी जो भगवान से संबंधित है Yeah. अलग किताबें नहीं हैं That was the culture. वो संस्कृति So Prabhupada continues here. This guy is not cooperating. Okay, better. Physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita. की चीजें हैं जो पढ़ी हैं उनको हमें तिरस्कार किया गया है ज्ञान का क्यों अज्ञान है क्योंकि उसका लक्ष्य है भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करना Which means prolongation of the term of material existence and thereby continuance
of the threefold miseries of life. क्योंकि उसका मतलब है कि बहुत किसी को अज्ञान कहा गया माना गया। So prolonging the material life of material existence is nescience, ignorance. और अपनी भौतिक जिंदगी को बढ़ाना उसी को अज्ञान कहा जाता है। But the same knowledge, the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence. वही ज्ञान अगर उल्टा व्यक्ति को भगवान के धाम तक ले जाए And to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. तो ज्ञान हो जाएगा अगर वो भगवान के वासुदेव के भक्ति की तरफ पहुंचा रहे किसी को ज्ञान। So actually in the Vedic literature there are two types of knowledge, vidya. दो तरह की विद्या है भौतिक चीजों में। One is called Paravidya and one is called Aparavidya. पराविद्या का मतलब श्रुति शास्त्र है। Paravidya is directly in relation to the spirituality, spiritual subject matter. पराविद्या सीधा सीधा आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। And then there is Smriti, Aparavidya, of a material nature but connected with Krishna. Aparavidya. Things that are material but that are connected with Krishna. Material knowledge. Yeah. Means that in Shastra there is also material knowledge, but it's connected with Krishna. They are the Paravidya. No, that is Aparavidya. तो वो जो भगवान कृष्ण से संबंधित है वो सब पराविद्या। अपराविद्या। Yeah. Paravidya and Aparavidya. Just like there is Paraprakriti and Aparaprakriti. Paraprakriti is the living entity. Aparaprakriti is material nature. Connected with Krishna falls in the category, as mentioned here, of avidya, nescience. So that is why we sit in Bhagavatam class every day, although for some of us it may be tapasya. इसीलिए हम रोज भागवतम क्लास में बैठते हैं ये कुछ लोगों के लिए तपस्या हो सकता है But it is good tapasya. ये अच्छा तपस्या Yeah. If we don't attend Bhagavatam class, we are cultivating avidya, ignorance. अगर भागवतम क्लास में नहीं बैठे हैं तो अविद्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं। Yes. So just to continue here. The same applies to all kinds of austerities. Tapasya means voluntary acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. तपस्या का मतलब है खुद से स्वेच्छा से कुछ ऐसे कष्टों को लो जिससे कि कुछ ऊंचा चीज जीवन में प्राप्त हो। Ravana and Hiranyakashipu underwent a severe type of bodily torture to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe types of austerities to achieve some political end. Like sometimes they will fast for so many days. Yeah. This is not actually tapasya. Fasting during Chaturmas, fasting during Kartik. Yeah. It's a good time to talk about actual fasting is meant to be avoiding food altogether. But Srila Prabhupada has been very
lenient पापा जी बहुत उदार हुए, understanding that समझते थे not so easy to perform. कि आजकल के लोगों के बस का बात नहीं है। Yeah. Real Ekadasi is not only not fasting from food and water, nirdal, but is actually, it starts the day before Ekadasi and finishes the day after Ekadasi, and you can't sleep at night also. I mean, that's really... असली एकादशी की 10वीं से चालू होके द्वादशी तक वो फास्टिंग चालू हो जाता है। मतलब कल से उपवास चालू हो जाएगा, कल शाम से, और द्वादशी का सुबह तक चलेगा, और रात को भी जगना है। ये एकादशी है। Yeah. One should accept voluntary bodily inconvenience for the sake of knowing Vasudeva, because that is the way of real austerities. तो बाकी जितने भी तरह के तपस्या है उनको राजसिक या तामसिक तपस्या माना जाता है। Passion and ignorance cannot end the miseries of life. और दिक्कत यह है कि ऐसी राजसिक तामसिक तपस्या करके जीवन के कष्टों का अंत नहीं किया जा सकता है। Only the mode of goodness can mitigate the threefold miseries of life. So-called father and mother of Lord Krishna underwent penances to get Vasudeva as their son. वासुदेव देव की भगवान के माँ बाप जो है भगवान को बच्चा के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा तपस्या की। Lord Sri Krishna is the father of all living beings. इसमें तो सबके पिता है। Therefore, he is the original living being of all other living beings. ये सब सभी जीवों के आदि जीव हैं। He is the original eternal enjoyer amongst all other enjoyers. जितने भी भोग करने वाले जीव हैं उसमें से असली भोग करने वाले जीव तो भगवान ही हैं। Therefore, no one can be his begetting father as the ignorant may think. No one can be begetting? No one can be his begetting father. No one can be his father. Yeah. इसलिए उनका कोई जन्म देने वाला पिता हो नहीं सकता। Yeah. Lord Sri Krishna agreed to become the son of Vasudeva and Devaki upon being pleased with their service austerities. Severe austerities. कड़क तपस्या से प्रसन्न होकर उनके बेटे के रूप में। Therefore, conclusion is, if any austerities have to be done, they must be done to achieve the end of knowledge, which is Vasudeva. इसलिए अगर कोई तपस्या करना है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा तक वासुदेव तक पहुंचना चाहिए। Yeah. Not only tapasya, all activities that we may be doing during the day or the night, they must be for connecting or pleasing Vasudeva, Krishna. केवल तपस्या ही नहीं, दिन रात जो भी कुछ कर रहे हैं, आखिरी में सब कुछ भगवान वासुदेव की प्रसन्नता तक पहुंचनी चाहिए। And that is why Srila Prabhupada, he would emphasize or explain that Krishna consciousness means to be engaged 24 hours a day. इसलिए भगवान प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भावनामृत का मतलब है 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहना। And it is possible, but it takes a little practice. Yes, हो सकता है, लेकिन practice चाहिए। Yeah. So, last portion of the purport. Vasudeva is the original personality of Godhead, Lord Sri Krishna. As explained before, the original personality of Godhead expands himself by innumerable forms. Yes? भगवान वासुदेव जो है असली परम भगवान है और वही अनेक अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। Such expansions of forms is made possible by his various energies. और ऐसे विस्तार उनके अनंत शक्तियों के द्वारा संभव होता है। His energies are also multifarious, and his internal energies are superior and external energies inferior. उनकी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वो ऊंचा है, बहिरंगा शक्ति जो है वो नीचे। Yeah. This is part of cultivation of knowledge. ये हमको ज्ञान में समझना चाहिए। Yeah. Then Prabhupada explained, this is explained in the Bhagavad Gita as the para and apara prakritis.
गीता में परा अपरा प्रकृति जैसे लिखा है वो उसे को समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। Why is a living entity referred to as para prakriti? Who can say? जीव को परा प्रकृति क्यों कहा गया है, कौन बता सकता Why is the material nature and why is a living entity both prakriti? है? भौतिक प्रकृति और जीव दोनों को प्रकृति क्यों कहा गया है? Because Lord Krishna is supreme Purus and we are all part and parcel. So we are called Prakriti. ये ऐसा तो Yes. Yeah. Prakriti means subordinate, and prakriti means one who is controlled. yes. पॉइंट हुआ है, जो जिसको कंट्रोल करता है उसका ऊपर, ये कंट्रोल वाला पॉइंट बोलने पर Yes. Material nature is controlled, created by Krishna, controlled by Krishna. Living entity is controlled and created by Krishna. Yeah. भौतिक प्रकृति और जीव दोनों जो है भगवान से नियंत्रित है, इसलिए नीचे की शक्ति कहलाएगी। This is our disease in the material world. दुनिया में हमारी बीमारी क्या है? We have forgotten that we're meant to be controlled. हम भूल गए कि हमको कंट्रोल किया जा रहा है, We're always trying to control हम others. ऐसा कंट्रोल करना चाहते हैं। Our disease, big disease. बहुत बड़ा डिजीज है, बहुत बड़ा बीमारी हमारे अंदर लग चुकी है। Everyone has that disease. हर आदमी को ये बीमारी है। Yeah. The root of it being ahankara. तो उसको उस बीमारी का जड़ जो है अहंकार का जड़ है। So his expansions, Krishna's expansions of various forms which take place via the internal energies are superior forms, whereas the expansions which take place via the external energies are inferior forms. जो अंतरंग शक्ति के द्वारा जो विस्तारित स्वरूप भगवान के हैं वो ऊपर वाले रूप हैं, और जो बहिरंग शक्ति से जो विस्तार होते हैं वो नीचे के रूप। The living entities are also his expansions. जीव भी उनका ही विस्तारित स्वरूप है। The living entities who are expanded by his internal potency are eternally liberated persons. जो जीव उनके अंतरंग शक्ति से विस्तारित हुए हैं वो नित्य सिद्ध है, Whereas those who are expanded in terms of the material energies are eternally conditioned souls. लेकिन जो भौतिक प्रकृति से जो लोग जो बहिरंग शक्ति से जो निकले हैं वो नित्य बद्ध जीव। Therefore, all culture of knowledge, austerities and sacrifice and activities should be aimed at changing the way of the influence that is acting upon us. इसलिए जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमारा गोल लक्ष्य होना चाहिए कि जो हम पे जो बहिरंग और अंतरंग शक्ति जो कार्य कर रही है, तो बहिरंग से अंतरंग शक्ति की तरफ हम कैसे अपने आप को मोड़ सकते हैं, वही हमारा प्रयास होना चाहिए। For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord. अभी हम भगवान के बहिरंग शक्ति के द्वारा नियंत्रित हैं, And just to change the quality of the influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. और अगर इसको हमको बदलना है तो हमको आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। In the Bhagavad Gita, it is said that those who are Mahatmas, or those whose minds have been so broadened as to be engaged in the service of Lord Krishna, are under the influence of the internal potency. भगवद गीता में लिखा है चित्त का मन भगवान की प्रेरणा में लगा हुआ है, भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, वो भगवान के अंतरंग शक्ति से जुड़े हुए हैं। And the effect of such broad-minded living entities, what will be the effect if someone becomes influenced or allows himself to be influenced by the internal energy, Daivi Prakriti? भगवान के अंतरंग शक्ति से अगर अपने को प्रभावित कर लेता है तो क्या होगा? What will be the practical demonstration of that Satchitananda? Yes, so Prabhupada is telling here, constantly engaged in the service of the Lord without deviation. तो प्रभुपाद यह कह रहे हैं कि वो हमेशा भक्ति में लगा रहेगा बिना डेविएशन, बिना विचलित हुए। Yeah, and that is how one will become happy. और इस तरह से वो सुखी बनेगा। That should be the aim of life. वही जीवन का लक्ष्य है। And that is the verdict of all Vedic literatures. और यही वेदों का
एकमात्र सार है, Yeah. सार कथन है। No one should bother himself with fruitive activities and dry speculation about transcendental knowledge. किसी को भी अधिकार नहीं है कि भगवान के दिव्य दिव्यता दिव्य 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 ज्ञान के ऊपर अपने मन गढ़ंत कहानियां बनाए। Yes. Everyone should at once means right away, immediately, हर व्यक्ति को तुरंत ही engage himself in the transcendental loving service of the Lord. भगवान की दिव्य सेवा में तुरंत लग जाना चाहिए। Nor should one worship different demigods who work on different hands, who work as different hands of the Lord for creation, maintenance and destruction. लोगों व्यक्ति को अलग अलग देवताओं का भी सुनना नहीं चाहिए जो कि भगवान के अलग अलग अंग है। There are innumerable powerful demigods who look over the external management of the material world. बहुत ऐसे शक्तिशाली देवता है कि जैसे हवा है, अग्नि है, पूरे ब्रह्मांड के हवा, अग्नि, पानी, ये लोग सबको कंट्रोल करते हैं। They are all different assisting hands of Lord Vasudeva. वासुदेव के ये लोग सहायक अंग जैसे काम करते हैं। Even Lord Shiva and Lord Brahma are और शिव भी एक काम करते हैं। included in the list of demigods, but Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendentally लेकिन भगवान situated. विष्णु इस देवताओं के लिस्ट से ऊपर है, उनको कंट्रोल करने वाले। Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he is still transcendental to all the material modes. हालांकि भगवान विष्णु जब आते हैं तो दुनिया के 3 गुणों में से सत्व गुण को पकड़ते हैं, फिर भी वो तीनों गुणों से परे निर्गुण है। And the last section of the purport Prabhupada is telling that the following example will clear the matter more explicitly. भगवान जी कहते हैं कि इस उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट समझेगा, सुनिए क्या होगा। In the prison house, there are the prisoners and the managers of the prison house. जेल में कैदी हैं, जेलर है, जेल है। Both the managers and the prisoners are bound by the laws of the king. जो जेल है, जो जेल में कैदी हैं, ये सब राजा के नियम से बंधे हैं। But even though the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. कभी-कभी राजा जेल घूमने जाता है, लेकिन जेल के नियम उसमें नहीं लगते हैं। The king is therefore always transcendental to the laws of the prison house. इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि जेल के नियमों से परे है। As the Lord is always transcendental to the laws of the material वैसे ही world. भगवान भी भौतिक जगत के नियमों से परे हैं। Yes. And our great fortune is that although we are the Paraprakriti, although we are inferior, we can also become transcendental like Krishna to the material energy. मजे की बात ये है कि हालांकि हम लोग परप्रकृति, हम नीचे वाली प्रकृति है, फिर भी हम इसको हम पार करके हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। Yeah. By this cultivation, by cultivating this knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. भगवद गीता भागवतम के ज्ञान को हम बढ़ा के इस तरह से हम वहाँ जुड़ सकते हैं। Any comments or questions? कमेंट है, कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, प्रश्न पूछना है। Yes, your hand is halfway up. Before I send it, yes. Hare Krishna Maharaj, thank you for very wonderful class. Maharaj, I had a question that how can one be engaged 24 hours in devotional service, like we sleep and then we forget Krishna. How can we be engaged? Yes. Like 24 hours. Yeah, yeah, right. 24 hours seems like a lot. Like not possible. Right. Yes. You can translate your question and welcome. प्रश्न है कि रात में तो सो जाते हैं हम लोग, तो फिर 24 घंटे भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? You're asking for yourself or for the benefit of others? अपने लिए पूछ रहे हैं कि सबके लिए पूछ रहे हैं। It's a good question for everyone, actually. This may seem impossible,
ये असंभव दिखेगा, definitely not easy to do or to accomplish. ये आसान नहीं है, But actually that is the objective. लेकिन हमारा लक्ष्य है। The Mahatmas, the Paramahamsas, the self-realized souls, they are 24 hours a day, including at night when they... You can take Bilberg and chanting in sleep. Not that kind of sleep. It is possible by practice. ये प्रैक्टिस करने से संभव है। Yeah, that is all very nicely explained by Srila Rupa Goswami, प्रभु स्वामी कहते हैं, Nectar Devotion. भक्ति स्वामी से सुनिए, The Nectar Devotion, one of our most important books, explaining the science of Bhakti Yoga, isn't it? भक्ति और विज्ञान को बताता है। So, from sadhana bhakti, gradually as one becomes purifies, one rises to bhava bhakti and then eventually to prema bhakti. Prema bhakti is that position of being 24 hours. ये मैंने जो है उसको लिखा है, कैसे साधना भक्ति से भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में धीरे धीरे करके व्यक्ति उठ सकता है। Yeah. It means there's no magic, what is it? Word. Yeah, correct. इसका मतलब है कि कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमा दिया जाए तुम अभी का अभी 24 घंटे करने लगे। There's no... मेहनत करना पड़ेगा। Means the simple process, as very nicely given by our acharyas, we simply have to nicely, properly apply that process. सादा सा तरीका आचार्यों ने दिया है, उसको बस करना है। It's just like if you're cooking something, if you cook some particular preparation that जैसे आप कुछ सब्जी कुछ खीर बनाते हो, you have to follow the recipe. तो उसमें जो लिखा है वही डालना है। If you nicely follow the recipe, your cake will come out very nice. जैसे केक बनाना है तो उसमें जो चीज डालना है वही लिखा है। And most people who don't follow, their cake is flop. और अगर वो नहीं कुछ अपना चीज डाल दोगे तो केक गिर जाएगा, उठेगा नहीं। Nobody will eat your cake. वह केक कोई खाएगा नहीं। Yeah. So to get the end result, we have to follow the recipes, the formulas are all given in the Shastra. वैसे ही इसमें भक्ति का केक अगर उठाना है तो भक्ति के केक को बेक करने का जो फार्मूला आचार्यों ने दिया है, उस आचार्यों के फार्मूले से बेक करके भक्ति के केक को आप उठा सकते So when at night time you will start dreaming about Krishna, then you will begin to understand. जब आप रात में कृष्ण के सपने देखोगे जो अभी देख रहे हो उसको अलावे तब आप उसको समझ पाओगे कि रात में भक्ति होता है। Most people cannot even sleep peacefully at night. अधिकतर लोगों को रात में नींद नहीं आता है। Most people have nightmares and are haunted by ghosts. कई बार तो रात में भूतों के सपने आते हैं। Yeah, actually Kali Yuga is so bad that not only at night time are people haunted, but even in daytime. दिन में भी भूत दिखते हैं। कल इतना खराब है कि लोगों को दिन में भी भूत दिखते हैं। Yeah, because in so-called daytime people are unconscious. You know, they're just so covered up by दिन tamagun. में भी तमोगुण इतना उनके ऊपर चढ़ा रहता है। Yes. Yeah. दिन में भी तमोगुण चढ़ा रहता है। कंफर्म किया है। Any other? मैं कहना चाहता हूँ मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा भगवान के प्रति मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। How will get more self-confidence? How to get Self-confidence. self-confidence. Self-confidence automatically will come as we develop our true self. जैसे अपने आप को पहचानिएगा वैसे ही आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Yeah. The whole lesson here is to cultivate real knowledge, transcendental knowledge. By cultivating transcendental knowledge, one will become fully confident. दिव्य ज्ञान को बढ़ाने से
हम कॉन्फिडेंट रहें, Yes. Beginning with Bhagavad Gita. अपना गीता पढ़ना चालू करें Yeah. And chanting Hare और Krishna. शांति हरे कृष्णा जब चालू करें। Yeah. हरे और कुछ सवाल Okay. तो कुछ नहीं, कोई सवाल Now is time for practical application of the philosophy. अभी हम लोग इसको प्रायोगिक रूप में लेके आएंगे। Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, जय Gaura Premanande.